राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी का। लोकतंत्र की आधारशिला न्यायपालिका और लोक प्रतिनिधियों मुख्यमंत्रियों के इस सम्मेलन, इस संगम में आप सभी विद्वत जनों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया नागरिकों के अनुकूल हो, गरीबों की जरूरत के अनुरूप हो, सहज, सरल, सुगम, सुलभ और अविलंब न्याय की परिकल्पना फलीभूत हो। ये संकल्प हम सबका और भी मजबूत हो। केंद्र द्वारा ऊर्जा के जरिए तथा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सामंजस्य से न्याय प्रणाली के सामने आई चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, ये सम्मेलन इसी का मंथन है और निश्चित ही इससे अमृत की प्राप्ति होगी। ये सम्मेलन लोकतंत्र के सच्चे मूल्यों को मजबूत तो करेगा ही, भारत देश के होलिस्टिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। अब हमारा निवेदन है माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। Namaskar. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Justice of India, Shri N.V. Ramana ji, Honorable Chief Ministers of States, Honorable Judges of the Supreme Court of India, Lieutenant Governors of Union Territories, Honorable Chief Justices of High Courts, former Chief Justice of India, learned Attorney General, learned SG, other senior law officers, my colleagues from Department of Justice, senior officers, friends from media, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to welcome Honorable Prime Minister to the joint conference of Chief Ministers of States and Chief Justices of High Courts, an event aimed to deliberate on ways to deliver timely, affordable and quality justice to the citizens of this country. We are grateful to you, sir, for sparing your valuable time for this event, and we look forward to your valuable guidance. I extend a hearty welcome to Honorable Chief Justice of India to this confluence of heads of executive and judiciary. With great pleasure, I extend a warm welcome to Honorable Chief Ministers of States, Honorable Judges of Supreme Court, Lieutenant Governors of UTs, Chief Justices of High Courts, and other dignitaries. This august gathering here today is reflective of our collective commitment towards the guiding principles of this government, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. I am particularly energized by the presence of the Chief Ministers of the states and Chief Justices of High Courts in this conference. Your participation together can give shape and operate the idea of good governance and administration of justice. You are best placed to understand the challenges faced by the common man and measures that are needed to be adopted for enhancing access to justice in this country. This is a unique opportunity for an honest and constructive dialogue between the government and judiciary on finding concrete solutions for efficient delivery of justice. A lot was achieved in the last joint conference held in April 2016. I'm happy and encouraged to note that a lot of ground has since been covered over the last 6 years. This is all due to some praiseworthy collaboration between the executive and judiciary at both central and state levels. I'm happy to state that the centrally sponsored schemes for development of infrastructure facilities for judiciary has been extended till 2025-26 with the budgetary outlay of 9,000 crore, including the central share of 5,307 crore. The COVID pandemic has hard hit our judiciary delivery mechanism. Embarking on the Digital India vision of Honorable Prime Minister, the e-court integrated mission mode project was launched with an objective of improving access to justice using technology. Under the project, 18,735 courts across the country have been computerized. Our courts have risen to the occasion and made use of innovative information
and communication technology means to keep justice system accessible to common man through e-filing of cases and hearing through video conferencing. Supreme Court has emerged as a global leader with more than 2.8 lakh virtual hearing. The high courts and district courts together have conducted nearly 1.84 crore virtual hearings. Another significant contribution under the e-court project is National Judicial Data Grid, through which lawyers and litigants can access case status information of over 20.23 crore cases and 17.22 crore orders and judgments pertaining to these courts. The data is uploaded on real-time basis by the connected courts. Yet another landmark achievement of e-courts project in the country is the setting up of virtual courts. There are 17 virtual courts functioning in 13 states and UTs, which primarily deal with petty traffic offenses. These courts have covered nearly 1.39 crore cases and realized 236.88 crore online fines. Besides being environmentally friendly, as cases are adjudicated in a paperless manner, it has led to saving of judicial manpower and added to the convenience of the citizens. An array of legislative and policy reforms have been launched to strengthen the enforcing contracts regime under the ease of doing business initiative of the government. For speedy resolution of commercial cases, the Commercial Courts Act 2015 was passed and again amended in 2018, which led to the establishment of dedicated commercial courts for the first time in Delhi, Mumbai, Kolkata, and Bengaluru, with dedicated infrastructure and exclusive judicial officers and staff. This has led to the focused attention on commercial disputes resolution and their speedy disposal. As part of the agenda of this meeting, it is proposed that in case more than 500 commercial disputes are pending, state governments may consider establishing one more dedicated commercial court for the same. In cases where the pendency is less than 500 commercial disputes, establishment of designated commercial courts may be considered to aid efficient and timely disposal of commercial cases. Emphasis has been made to promote alternative dispute resolution mechanism. The Mediation Bill 2021 is introduced in the Parliament, which is in furtherance of the endeavor of the government to provide parties to a dispute an efficacious remedy avoiding recourse to litigation. I take this opportunity to laud the efforts of NALSA in taking steps to introduce online filing of pre-institution mediation and organizing e-lok adalats, especially during pandemic. I particularly laud all the panel lawyers, paralegal volunteers under SLS, DLSAs, and Taluka level state authorities for their outstanding contribution in spreading legal awareness and providing legal aid to citizens in remote corners of the country. I'm very happy to inform that Department of Justice is entering into an agreement with NALSA with an aim to create a synergy between schemes, especially Telelaw and Nyay Bandhu. This agreement will facilitate expansion of telelaw services through trained lawyers in every district of the country. I request all the states and union territories to extend their wholehearted support in reaching the unreached. I would like to remind that in order to ensure free and fair delivery of justice, it is extremely important that court complexes work in a safe and sound environment. I request the state government to ensure adequate security to the judges and court complexes. I also urge all other officials of the courts, including the bar associations, to create a conducive and enabling environment in maintaining the decorum of the court and court complexes. I am confident that under the able guidance of Honorable Prime Minister and Honorable Chief Justice of India, we will be able to uphold constitutional principles of justice, equality and fairness entrusted to us. I have been personally influenced deeply by the philosophy of integral humanism and the concept of Antyodaya, propounded by Pandit Dindayal Upadhyay, which means rise of the last person, which is also means justice to the last man standing. This brings me to the end of my welcome address, with strongly endorsing the view of the first Law Minister of India, Dr. B.R. Ambedkar, who said,
justice is another name of liberty, equality, and fraternity. Thank you very much. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। और अब हमारा विनम्र आग्रह है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस श्री एन.वी. रमन्ना जी आपसे कि कृपया अपने विचार प्रस्तुत करें। Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Union Minister for Law and Justice, Sri Kiran Rijiju ji, Brother Justice U.V. Lalit, Sri S.P. Singh Baghela, Minister for State for Law and Justice, Chief Ministers and Ministers from different states, Brother and Sister Judges of the Supreme Court, Sri K.K. Venugopal, Learned Attorney General, Chief Justices of different High Courts, Lieutenant Governors, Judges of High Courts, Chairpersons of the Tribunals, Learned Solicitor General, Additional Solicitor General, Law Officers, Judicial Officers, Media Persons, other distinguished guests, ladies and gentlemen, Namaskar. I am very happy to be taking part in the 11th Joint Conference of Chief Ministers and Chief Justices for two reasons. Firstly, because we are meeting after 6 long years. Secondly, among us, the public representatives, this is an opportunity for us to learn from your rich experience, knowledge, and wisdom that you have acquired in public life. You are the live link with the people. In your own way, each of one of you is a great opinion builder. Those in public life often come across the grievances of people, including those relating to the judiciary. You are the best placed to enlighten us about the expectations of the people. It is your experience in the field that is going to help us to understand ground realities. I am eagerly looking forward to collaborating with you in identifying and addressing the existing challenges to improve the functioning of the judiciary. All of us are constitutional functionaries, and we abide by the constitutional mandate. The role assigned to each of us needs no reiteration. The Constitution provides for separation of powers between the three organs, clearly outlining their sphere of functioning, delineating their power and responsibilities. It is the harmonious and coordinated functioning among the three organs of the state that has preserved and strengthened the democratic foundation of this great nation over the last 7 decades. While discharging our duties, we all must be mindful of the Lakshmana Rekha. The judiciary would never come in the way of governance if it is in accordance with law. We share your anxiety and concern regarding the welfare of the people. However, at the head of the judiciary, Indian judiciary, I shall attempt to present a broader picture about the judiciary as a whole and highlight the issues that are affecting the system. The 140 crore strong population of the world's largest democracy is bound to test its judiciary. No other constitutional court in the world hears such a wide range of issues in which large number. The situation was foreseen by the first Chief Justice of India, Justice Hiralal Kanya, who had once said, I quote, "This court would be called upon to discharge its duties as perhaps no other court has so far been called upon to do so," unquote. I would like to begin with the identifying few contributing factors for docket explosion in the Indian scenario. If a Tahsildar acts upon a grievance of a farmer regarding land survey or a ration card, the farmer would not think of approaching the court. If a municipal authority or a Gram Panchayat discharges its duty properly, the citizens need not look to courts.
If revenue authorities acquired land through due process of law, the courts would not be burdened by land disputes. Apparently, these cases account to 66% of pendency. It is beyond my understanding as to why interdepartmental disputes of the governments or fights between public sector undertakings and the governments end up in courts. If service laws are applied fairly in matters of seniority, pension, and so on, no employee will be compelled to go to courts. It is well known and acknowledged fact that government are the biggest litigants. According to the statistics, it is nearly 50% of the cases. If police investigates properly, fairly, if illegal arrests and custodial torture comes to an end, then no victim will have to approach the courts. Abiding by law and constitution is the key to good governance. However, this is often ignored. The opinions of law departments are not sought in the rush to implement executive decisions. Lack of people, special public prosecutors and standing counsels and the government leaders in courts is one of the major concerns which needs urgent remedy. The decisions of the court are not implemented by governments for years together. The resultant contempt petitions are a new category of burden on the courts, which is a direct result of defiance by governments. Deliberate inaction by the governments, despite judicial pronouncements, are not good for the health of democracy. The judiciary is also confronted with the issues of the executive, willingly transferring the burden of decision-making to it. Although policy making is not our domain, but if a citizen comes to the court with a prayer to address his grievance, the courts cannot say no. At times, ambiguities in legislation also add to existing legal issues. If the legislature passes a law with clarity of thought, foresight, and with people's welfare in mind, the scope of litigation gets minimized. The legislature is expected to solicit the views of the public and debate the bills clause by clause, threadbare, before enacting a law. When I expressed concern about the passing of laws without much legislative scrutiny on the 15th August last year, I was misunderstood by some quarters. Let there be no doubt, I have the highest regard for the legislature and the elected representatives. I value the role played by each of them in our democracy, right from a ward member to a member of parliament. I was merely pointing towards certain deficiencies. Interestingly, my sentiments of law making in India were shared by none other than the Honorable Lok Sabha Speaker, Sri Om Birla, who reportedly a few weeks back, I quote, "Law should be made after thorough debates and discussions, incorporating the needs of the aspirational sections of the society," unquote. Based on these principles, one can safely summarize that often litigation is triggered because of two major reasons. One is non-performance by various wings of the executive. Second is the legislature not realizing its full potential. I am sure you will all agree with me that these are avoidable burdens on judicial system. On various occasions, I have elaborated on the complexities involved in these issues. I am aware that there are certain concerns with the judicial system also. With regarding to timely delivery of justice and pendency. Pendency is often blamed on the judiciary due to paucity of time. I cannot explain the same in detail now. But a keen look at the websites of the courts will give you an idea about the huge workload on judges. The number of cases filed and disposed on each day is unimaginable. The rising number of frivolous litigations in an area of concern. For example, the well-meaning concept of public interest litigation is at times turning into personal interest litigation. No doubt, PIL has served a lot of public interest. However, it is sometimes being misused to stall projects or pressurize public authorities. These days, PIL has become a tool for those who want to settle scores or corporate rivalry. Realizing the potential for misuse, courts are now highly conscious in the entertaining of the same.
This conference is an occasion for us to introspect and contemplate solutions. I have been a strong proponent of Indianization of the justice delivery system. By Indianization, I mean increasing accessibility by molding the system to suit the needs and sensibilities of the Indian population. It is a multi-dimensional concept. It calls for inclusivity, providing access to justice, removal of language barriers, reforms in practice and procedure, development of infrastructure, filling up of vacancies, augmenting the strength of the judiciary, and so on. I am of the firm belief that judicial infrastructure, both in terms of personal and physical infrastructure, needs urgent attention. With the expanding economy and growth in population, the caseload is rising alarmingly. There is a severe gap between the existing infrastructure and the projected justice needs of the people. The environment of some courts, in some district courts, is such even lady advocates feel apprehensive about entering courtrooms, let alone female clients. Courts, being temples of justice, should be welcoming and carry the requisite dignity and aura. To standardize and improve judicial infrastructure, I have been focusing on the creation of special purpose vehicles, namely National Judicial Infrastructure Authority and the State Judicial Infrastructure Authorities in the lines of NALSA and SALSA. Let me make it very clear, this is not about funds. I must acknowledge that the Union government has been making reasonably budgetary allocations through its centrally sponsored schemes for this purpose. The data since the inception of the scheme since 1993 to 94 suggests that allocated funds remain underutilized due to procedural difficulties. The time has come to move on from the present ad hoc committees to more streamlined, accountable, and organized structure. I want to dispel apprehensions emerging from certain sections on this proposal. The proposed authorities are not aimed at usurping the powers of any government. The proposed authorities will have representation from all the stakeholders. It must, however, be acknowledged that it is the judiciary which understands best its own needs and requirements. Hence, the present proposal aims to bring infrastructure development under the supervision of special purpose vehicles to be headed by the respective Chief Justices and involve the representatives of central and state governments. Another important factor in promoting access to justice is filling up of the vacancies, increasing and sanction strength of judges. Yesterday, at the Supreme Court Bar Association event, the learned Attorney General Sri K.K. Venugopal also highlighted the issue of vacancies and pendency, expressing concern about the large number of vacancies at different levels in the judiciary. He said, I quote, "How do you expect that we would be able to even make a dent in the pendency of cases?" Unquote. As on today, out of 1,104 sanctioned posts of High Court judges, there are 388 vacancies. From day one, it has been my endeavor to fill up judicial vacancies. We have made 180 recommendations for appointing in various courts during the last 1 year. Out of this, 126 appointments has been made. I thank the Government of India for clearing the names. However, 50 proposals are still waiting for approval. The High Courts have sent 100 names, which is yet to reach us. The data reveals the earnest efforts being made by the judiciary to fill the vacancies. I would like to urge the Honorable Chief Ministers to extend wholehearted cooperation to the Chief Justices in their endeavor to strengthen the district judiciary. When we last met in 2016, the sanction strength of judicial officers in the country was 20,811. Now it is 24,112, which is an increase of 16% in 6 years. On the other hand, in the corresponding period, pendency in district courts have gone up 2 crores 65 lakhs to 4 crores 11 lakhs, which is an increase 54.64%. This data shows how inadequate the increase in the sanction strength is. Unless the foundation is strong, the structure cannot be sustained. Please be generous in creating more posts and filling the vacancies so that our judge population ratio is comparable to advanced democracies.
As for sanction strength, we have just around 20 judges for 10 lakh population, which is alarming. Another important aspect of Indianization is inclusivity. The judiciary, as well as every other institution of our democracy, must mirror the social and geographical diversity of the country. I am receiving many representations for introducing local languages in the proceedings before the High Court. I think the time has come now to revisit the demand and take to its logical conclusion. The practice of law before constitutional court should be based on one's intelligence and understanding of law and not mere proficiency in language. The concept of access to justice in India is much broader than simply providing lawyers for representation before courts. I am proud to state that India has one of the best free legal aid services in the entire world. Under the able leadership of Brothers Justice Lalit, legal service authorities are doing a tremendous job. I thank the Government of India and other state governments providing active support in this area. Brother Justice Kanvilkar is contributing immensely, strengthening the Supreme Court legal service by deploying modern technology. Brother Justice Chandrachud is adding huge value to the e-courts project. His efforts will ultimately lead to much needed modernization of the Indian judiciary. Brother Justice L. Nageswara Rao heading a committee of artificial intelligence, whose work I believe is going to revolutionize the way the judiciary functions. I thank each one of them. Honorable Chief Ministers and Chief Justices, all that I can say is that it is the active collaboration based on our collective wisdom that can take us forward. Please remember, it is only the judicial process that is adversarial, not the judges or their judgments. We are merely discharging our constitutionally assigned role. Judgments are meant for delivering justice and should be seen as such. Let us work together for fulfilling the constitutional mandate. As Aristotle once said, law should govern and those in power should be servants of the law. I am sure the thoughts and concerns that you are going to share in this conference today will be placed before the Government of India. I am confident that the points which are actionable at the level of Government of India will receive deserving attention. I take this opportunity to thank the Honorable President of India, Sri Ramnath Kovindji, who always been a pillar of support for us. Being an accomplished lawyer himself, he has a practical understanding of the Indian legal system and has always been extremely supportive for all our endeavors. It was at his behest that the project of translating Supreme Court judgments to Indian languages was initiated. He graciously took out time to interact with us yesterday night over a dinner. We are grateful for the same. I am very happy that the Honorable Prime Minister Modi ji has taken out time for his busy schedule to share his thoughts on this occasion. He had readily agreed to lend his support to the legal awareness mission in the interest of increasing accessibility. I thank him for his continued support to the judiciary. My dear friend, Mr. Rijuji deserves special thanks, promptly responding to my suggestion to bring together the Chief Ministers and the Chief Justice for this event. I am very happy to work with him, such a young and energetic law minister who is keen on improving the legal system in India. I would like to thank my brother and sister judges of the Supreme Court who have given their full support to this event. I would like to specially thank Justice Lalit, Justice Kanvilkar, who spared no efforts to make this event a grand success. My best wishes to all the Chief Ministers, Lieutenant Governors, and the Chief Justices who have gathered here. I thank them for traveling to the national capital despite the short notice and their busy schedules. Your continued support is highly appreciated. I would like to thank the Secretary General, the Registrars of the Supreme Court and other staff, Secretary of Ministry of Law and Justice, and other officials of the Ministry who work day and night to ensure the success of this event. I am sure all your efforts will bear fruit, and I wish the conference as a great success. I will be failing my duty if I do not recall the invaluable services rendered by all in the most tiring times of the pandemic to keep the flag of the judiciary flying high. I offer my sincere condolences to the families of those who left us during this period. Before I end, I would like to quote a few words of Mahatma Gandhi ji. I quote,
man becomes great exactly in the degree in which he works for the welfare of his fellow men, unquote. It is in this spirit that we must strive to achieve the highest degree of greatness for our institutions. This is the befitting tribute that we can pay to our freedom fighters in these 75 years of the independence. Thank you very much for giving this opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी के गौरवशाली नेतृत्व में न्यू इंडिया नागरिकों की आकांक्षाओं का भारत बना रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास अब सबका उत्साह बनता जा रहा है। लोकतंत्र के मंदिर में सर झुकाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी न्याय सबके लिए के प्रति हृदय से समर्पित हैं और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए भी फिक्रमंद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी विनम्र अनुनय है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana ji, जस्टिस श्री यू ललित जी, देश के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल जी, राज्यों के सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज, ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला है। हमारे देश में जहां एक और जुडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस पहले भी होती आई है और उनसे हमेशा देश के लिए कुछ न कुछ नए विचार भी निकले हैं। लेकिन ये इस बार ये जो आयोजन अपने आप में और भी ज्यादा खास है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय में हो रही है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ, देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी
भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके, ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विषय विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान को विशेष महत्व दें, इसे आगे बढ़ाएं। डिजिटल इंडिया के साथ जुडिशरी का ये इंटीग्रेशन आज देश के सामान्य मानवी की अपेक्षा भी बन गई है। आप देखिए, आज कुछ साल पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन को हमारे देश के लिए असंभव माना जाता था। लोगों को लगता था, लोग शक करते थे, अरे ये हमारे देश में कैसे हो सकता है। और ये भी सोचा जाता है इसका स्कोप केवल शहरों तक ही सीमित रह सकता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन आज छोटे कस्बों और यहां तक गांवों में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आम बात होने लगी है। ये पूरे विश्व में पिछले साल जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, उसमें से 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं। सरकार से जुड़ी वो सेवाएं जिनके लिए पहले नागरिकों को महीनों ऑफिसेज के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब मोबाइल पर अवेलेबल हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक है, जिस नागरिक को सेवाएं और सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं, वो न्याय के अधिकार को लेकर भी वैसे ही अपेक्षाएं करेगा। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टेक फ्रेंडली ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। टेक्नोलॉजी आज युवाओं के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें सुनिश्चित करना है कि युवाओं की एक्सपर्टाइज, उनकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ कैसे बने। आजकल कई देशों में लॉ यूनिवर्सिटीज में
ब्लॉकचेन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोएथिक्स जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे देश में भी लीगल एजुकेशन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न्यायमूलम स्वराज्यम स्यात्, अर्थात किसी भी देश में स्वराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं। और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है। अभी मैंने एक टोली बनाई है, वो उसका अध्ययन कर रही है। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है। और मुझे अच्छा लगा, सीजेआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया। तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। लेकिन उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका के तराजू तक जाने की जरूरत नहीं होती है। सामाजिक न्याय के लिए कभी भाषा भी बहुत बड़ा कारण बन सकती है। साथियों, एक गंभीर विषय सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को, 1450 कानूनों को हमने खत्म किया। लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मैं आज सब बड़ी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए
उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, कालबाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए, लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी। साथियों, न्यायिक सुधार केवल एक नीतिगत विषय या पॉलिसी मैटर ही नहीं है। देश में लंबित करोड़ों केसेस के लिए पॉलिसी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर संभव प्रयास देश में हो रहे हैं और हमने बार बार इसकी चर्चा भी की है। इस कॉन्फ्रेंस में भी आप सब एक्सपर्ट्स इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे ही, ये मुझे पर विश्वास है। और मैं शायद बहुत लंबे अरसे तक इस मीटिंग में बैठा हुआ हूं, शायद जजीज को ऐसी मीटिंग में आने का जितना अवसर मिला होगा उससे ज्यादा मुझे मिला है, क्योंकि मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में आता रहता था। अब यहाँ बैठना मौका आ गया है तो यहाँ से आता रहता हूँ, तो एक प्रकार से मैं इस महफिल में सीनियर हूँ। साथियों, इस विषय में जब मैं बात कर रहा था तो मैं मानता हूं कि इन सारे कामों में मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई है। मानवीय संवेदनाओं को भी हमें केंद्र में रखना ही होगा। आज देश में करीब 3.5 लाख प्रिजनर्स ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है और जेल में है। इनमें से अधिकांश लोग गरीब या सामान्य परिवारों से। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है ताकि इन केसेस की समीक्षा हो सके, जहां संभव हो बेल पर उन्हें रिहा किया जा सके। मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि मानवीय संवेदनाओं, उन संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को भी अगर संभव हो तो प्राथमिकता दी जाए। इसी तरह न्यायालयों में और खासकर स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता, मीडिएशन भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। हमारे समाज में तो मध्यस्थता के जरिए विवादों के समाधान की हजारों साल पुरानी परंपरा है। आपसी सहमति और परस्पर भागीदारी, ये न्याय की अपनी एक अलग मानवीय अवधारणा है। अगर हम देखें तो हमारे समाज का वो स्वभाव कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। हमने हमारी उन परंपराओं को खोया नहीं है। हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है। और जैसे चीफ साहब ने ललित जी की तारीफ की, मैं भी करना चाहूंगा। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, हर राज्य में गए इस काम के लिए, और सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में गए। साथियों, मामलों का कम समय में समाधान भी होता है, न्यायालयों का बोझ भी कम होता है और सोशल फैब्रिक भी सुरक्षित रहता है। हमने इसी सोच के साथ संसद में मीडिएशन बिल को भी एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी पेश किया है। अपनी रीच लीगल एक्सपर्टाइज के साथ हम मीडिएशन से सॉल्यूशन की विधा में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। हम पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल पेश कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि प्राचीन मानवीय मूल्यों और आधुनिक अप्रोच के साथ इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सभी विषयों पर आप सब विद्वज्जन विस्तार से चर्चा करके, मंथन करके उस अमृत को लाओगे जो शायद आने वाली पीढ़ियों तक काम आएगा। इस कॉन्फ्रेंस में जो नए आइडियाज निकलेंगे, जो नए निष्कर्ष निकलेंगे, वो नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बनेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार
आप सबके मार्गदर्शन के लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि देश के न्याय व्यवस्था के लिए सरकारों ने जो करना होगा, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो भरसक प्रयास करेगी ताकि हम सब मिलकर के देश के कोटि कोटि नागरिकों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण कर सके और 2047 में देश जब आजादी के 100 साल मनाए तब हम न्याय के क्षेत्र में भी और अधिक गौरव के साथ, और अधिक सम्मान के साथ, और अधिक संतोष के साथ आगे बढ़े। यही मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी प्रेरणा के लिए। और अब हमारा अनुरोध है माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी से कि कृपया आभार प्रकट करें।